हेलो अनित भाई। हेलो एसबी। हेलो क्रिश। कृषि बोस। गुड मॉर्निंग ब्रो। लाइक कर दो सब। ब्रदर योमिया पुल किया था थोड़ा, देखोगे प्लीज। योमिया तो टाइम हो गया। यूआईडी दो। हेलो अनित भाई। निवलेट बिल्ड और बेटर हो गया क्या पहले तो। पेमेंट में कुछ और दिया इन्होंने क्या। हम्म। ट्राई करो ये कोड्स। ट्राई करते हैं जी। पहला चल रहा है, दूसरा प्रीमो नहीं है यार। निबलेट आया भाई। मार्लन मार्लन अभी डिस्कॉर्ड आ सकता क्या। ये बिल्ड इन प्रोग्रेस। अरे मेरी आईडी खोल लियो। क्या है उसमें, तू डिस्कॉर्ड आ थोड़ी देर। 61 to 38। क्या वेपन है। एक क्या दे रखा है। लोगों को ये बहुत ज्यादा ही पसंद आती है भाई। सबको दे देते हैं। हेलो। क्या कर रहा मैं। हेलो। आवाज। यार थोड़ी देर में पढ़ाई करूंगा। अबे बता। डिस्क। हाँ बोल अरे बोल। तेरे पे कार्ड में बचे हैं क्या एपिक गेम पे जो पहले दिए थे तूने। मैं तेरे को पेटीएम कर देता हूँ, अभी वो ले रहा। लेकिन हाँ बचे तो होंगे मेरे पास तो। तो लेकिन ले रहा क्या तू। हाँ सोच रहा हूँ इस मंथ के लिए और ले अब लो। क्या कर गिव भी कर रहा है अब दोबारा। नहीं गिव अवे तो 500 पे करूंगा। ये अपने लिए खुद के ले लेना लेकिन। अच्छा। विस्ट अभी पूरी हुई नहीं है, 170 अरे वरना ले लेता। पिछली बार तो ले लिया था कितनी उससे। हो गई वेस्ट। मेरे पे हो गई 40 कुछ हो गई। कितनी हो गई वेस्ट। 40 40। तो बहुत अभी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। अटैक 6 तेरा। सही है भाई सही है। भाई क्रिट वैल्यू बढ़ेगी इसकी, एचपी ज्यादा है, एचपी वाला सब्सटेट हटाओ, ये सही है। डिफेंस ही यार भाई हटाओ इसे। चेंज होगा। भाई आर्टिफैक्ट्स इंप्रूव होंगे भाई अभी। हम्म। ये वो अब है क्या नया कोई। नया गॉड कैरेक्टर है क्या कोई। क्या बोलते हैं उसको। ड्रैगन ड्रैगन है।
ये मान ले, दिखाओ कैसे है। दिखाता हूँ भाई। अभी आर्टिफैक्ट इंप्रूव होंगे, ठीक है ना? अभी आपका ये ठीक है। कजुआ सर्कलेट भाई, कजुआ को ये मत बनाओ, सब डीपीएस बहुत डीपीएस मत बनाओ। ईएम दो का उससे बढ़िया है। कितना ही हम देखते हो पहले। 252 ईएम है इसका, 900 होता। मतलब सेंट्स वगैरह सब में ईएम दे दो भाई। सपोर्ट बिल्ड अच्छा है कजुआ का डीपीएस से। सिंचू देख लो। अग्नि एस भी ये रहा। वन हाइड्रो, तूने 2 पीस एचओडी दे दिया और अटैक। हार्ट ऑफ डेप्थ देने के बाद ना नीचे नोबलेस दे, अल्टीमेट का डैमेज भी बढ़ा भाई। वो भी ठीक है, लेकिन चल जाएगा अटैक, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेंज करियो, हार्डो डैमेज बोनस। इसमें तो कुछ है ही नहीं खास, चलेगा, लेकिन नोबलेस अल्टीमेट में बेटर रहता भाई। सैक्रिफिशियल होगी ना। ईआर क्यों दे रखा है? अटैक सेंट्स देना। हेलो बीस, यार कम हो जाएगा ना। सैक्रिफिशियल है ना, 2 बार मिलेगा वैसे भी हिट होने पर। दे दो भाई, मुझे नहीं पता था। आप खेलते ही नहीं हो अब यार, पहले पुल्स मिलते थे देखने को। भाई यार अब सेंट तो सटा। निकल रहा है शब्द में। The और बता duty of a Tengu warrior is क्या निकालना? क्या watch over the क्या mountains कुछ and भी नहीं भाई, मेरा forests, गेम ही नहीं while खेलता, that of the डिलीट कर Kujo रखा अब तो गेम clan भी is पूरा। to guard Inazuma. दिखा ना तेरा These कैरेक्टर two कौन सा are of है। the same ilk. कैरेक्टर ये वाला है। ट्रायल दिखाऊं या ऐसे? हाँ मतलब क्या करता है बस ये बता दे। चार्ज वो अटैक है मारता है मस्त मस्त। वो है कि क्या कहते हैं उसे, गॉड है क्या ये कोई से रीजन का। अरे जस्ट वो नहीं था जो अपन, तूने स्टोरी देखी है? उसमें वो जज होता है जो चाइल्ड को वो वन शॉट कर देता है। अच्छा है क्या बहुत ज्यादा। हाँ बढ़िया है। डिस्कॉर्ड पर कुछ भेजा, अभी चेक करो। हाइड्रो और कौन का ना, तेरे पे इंस्टॉल्ड है क्या गेम अभी? इसमें तेरे पे ना। तो देख ले यार, कार्ड में हो तो, क्योंकि मेरे पे इंस्टॉल नहीं है और मैं पेटीएम से कर नहीं सकता। तो डायरेक्ट कार्ड से करते हैं। ये देखियो अल्ट मेरे पर डिटेल्स वही रखी है ना तो वो कार्ड की। बढ़िया है ना, देख मेरी आईडी में निकाल दे। तेरी वो आईडी पे कैरेक्टर है क्या? ना ना कैटलिस्ट है। एक बार खोल के बढ़िया लग रहा है तो यार। ना कुछ और भी भेजा हूँ निकालियो मेरी आईडी पे जरा। पुल्स हैं तेरे पे और क्या नहीं भाई। कमीने इंसान, न्यूबलेट 10-15 के तो बाद पड़ेगी। तुरंत ही पहले पुल में हूँ मिल गई इसे बीस्ट को। भाई ये होता है ना मस्त। कमीना हो तो हो, कोई बीस्ट जैसा लाओ। अरे मैंने तो कार्ड तो भेज रखा था, कर दिया उससे पेमेंट। बता दे वो जब करेगा। आप भी कर देते हैं। मेरे चैट इग्नोर मार रहा है जेम्स भाई। नहीं भाई, मैं थोड़ी देर अभी ट्रायल में बिजी था। क्या था?
मेरा नेवलेट देख लो। ओके, अनित भाई किधर है? ये रहा, लेट्स 90 कर दिया आज। 311 क्रिट डैमेज। ठीक है भाई, वेपन 90 हो गया। टैलेंट्स भी हो ही जाएंगे क्राउन, 1-2 दिन में लग रहा। बस अपन दोनों को ही इग्नोर मारता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ट्री गेमिंग 717। वो लास्ट टाइम सेंट्स देखा था ना, वो सेंट्स चेंज करो यार। सेंट्स ही तो आई गेस। इसे भी देखना, फ्लावर को। ना फ्लावर था वो। देख लो, फ्लावर अच्छा मिल जाए कोई, और हो सके तो उसमें क्रिट रेट आ जाए, वो देख लेना। ठीक है जेम्स, कर लियो तू, मैं निकल रहा है, ठीक है। अरे देख, है क्या उसमें कंफर्म? अरे होंगे होंगे, सोचो होंगे, टेंशन में दे रखा है। इतने ज्यादा हैं क्या? बी राइट क्या? बैक। अब भी देखते हैं। अभी क्या कुछ खेलता नहीं है क्या? थोड़ी देर चैट ना, देख लेना, ठीक है ना? 2 मिनट में अभी कुछ बाय कर रहा। ये रेडन के पास चलो आ। तेरे पे मैं कितने तो पुल नहीं होंगे मेरे तो को बता, तेरे पे जाके पुल देख लेते हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है पता भाई। नहीं, मेरे को छोड़। नेवलेट कुछ नहीं अच्छा पता है मुझे, वैसे। शिंडी ने करे होंगे। हाँ है तो अच्छा। अबे एपिक रिवॉर्ड से शिंडी कर शिंडी सकता भी हूँ नहीं क्या मैं? खेलता तू? कर सकता है। प्लेस ऑर्डर, इसमें दिखा रहा है मेरे पे 24 का कुछ है। डर है, कोई नहीं। $24 होते तो मजा आ जाता जेम्स सर। थोड़े ही पैसों का फायदा हो रहा है बस। जितने का भी हो रहा है, हो तो रहा है। 15-16 फ्लेजिल रेजिन लगा बस। हेलो मिको, 15-16 भी बहुत होता है भाई, फ्रेजिल मानना। एसबी के में देखो 124 पड़ा है फ्रेजिल, यूज नहीं करता कमीना। कहाँ है एसबी? चला गया क्या? लास्ट उसने ये बताया था 50 पल में होगा। 640। अब फिर से फ्रेजिल रेजिन 7। कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई किरीटो। स्टेट कौन सा डालूं? क्या डाले? स्टेट एमपी डाल दूं क्या? कुछ डाल दे, डाल दे डाल दे। मैं इतनी निकला ज्यादा था डिटेल क्यों डिवीजन लगे? 1 क्रैक ढूंढने, मिल गया मुझे रेसिडेंट एविल 4 रीमेक। ठीक है भाई। ओके, 13, 14, 15 थोड़ा और मिल जाएगा तो अभी 10 पुल हो पाएंगे। अभी करके देखते हैं कोई मिशन वगैरह। तेरे को नंबर कौन से पे? यही नंबर होगा ना तेरा पुराना वाला?
अबे कुछ हाँ बाई कर, वेकन बाई कर रहा था क्रिटो। मिकू चला गया क्या? आज कमीशन कर दोगे ना? मैं हाँ कर देंगे भाई, ऑब्वियसली। प्रीमो जेम्स ले लो, एनिवर्सरी वाला इवेंट आ गया है। सीधे सीधे हो गए हैं क्या? चलो भाई। अरे 4 स्टार हट। कुछ नहीं बोला। ये जादू मेरे अकाउंट में भी कर दो। जेम्स अब ठीक है। कौन से जेम्स में निकल रहा ये है, ठीक है। नंबर बता हो गया दियो ना, तू अपना, किस पे भेजना है, ठीक है? इस वाले पे भेज दियो। हम्म इस वाले पे है ना, आई एम हेयर ये वाला। कह रहा हूँ। कोई कैरेक्टर निकाला तूने मेरे को? हम्म। हाँ 500 सब पे बोला था भाई किरीटो। 77 पिटी गारंटी है, इसलिए सोच रहा हूँ फुरीना निकालूंगा। सही है भाई, सही है। आज 46 पे प्रीमियम मिला क्या? और ट्रे गेमिंग तूने कुछ निकाला? ट्रे गेमिंग बोला तो कि गगन कर रहा था, होता दिया। उसके बाद होमा, होमा पे ट्राई किया। बाहर जाओ भाई, वहाँ नहीं है जेली। अंदर नहीं है। ना लैक ऑफ विशेस। अरे मिलेंगी ना, अभी तो 400 तो मेल से ही मिल रही होगी। हम्म।
मादरा डीपी में सासुके का नाम, अबे गंजुत्सु है वो। आपने क्या निकाला? मैंने नेवलेट की वेपन निकाली, फिर स्काईवर्ड स्पाइन निकाली, अब स्टाफ ऑफ होमा निकाल रहा हूँ। होमा निकल जा, नहीं निकलेगा। कितनी पिट्टी पे आ गया यार। अपन ने 11 पुल मारे ना, या 12, 10, 15, 20, 25, 41 के आसपास हो गई अपनी। आई मीन वेपन के लिए विशेष नहीं है इस पैच के बाद 4.6 तक के 4 कैरेक्टर तो ऐसे जो चाहिए ही चाहिए। आई मीन गेंजुत्सु ब्रेकआउट करो यार, किसी से बोलो तो मैं टच करे आउटसाइड वर्ल्ड में। यार होमा भी नहीं निकल रहा यार, क्या किस्मत है। चलो मेरे बताओ देखो, और नोट रिव्यू करने से पहले मेरा सिग्नेचर छोड़ देना। सिग्नेचर Silly फटाक से देख लिया हमने, किसी और को नहीं दिखाएंगे। Silly Billy Hilly Churl. Woo. सिग्नेचर पढ़ लेना, ओके। आई डोंट हैव एनी गुड फॉर माई वेपन फॉर बताओ। कोई नहीं भाई, मिल जाएगी कभी। तेरे पे मैसेज वो नहीं है क्या, जो इवेंट में एक बार वेपन मिला था जो अटैक और ईएम देता है? क्रिम्सन के 4 पीस नहीं है भाई? जब होमा मिला तब भी मैं भी तो गेंजुत्सु में नहीं था। हाँ भाई, तब गेंजुत्सु में नहीं था, वरना लॉल हो जाता तुम्हारे साथ। क्रिम्सन के 4 पीस देना ट्री, ऐसे मजे नहीं आएंगे। 35 क्रिट वैल्यू अटैक यार। मैं तो अभी शमेनावा चला रहा पूरी। शमेनावा भी ठीक है, चार्ज अटैक बढ़ जाते हैं भाई, इम्प्रूव होगा। फिर भी 30+ है लेकिन ठीक है भाई। क्रिम्सन के 4 पीस देख ले, ऐसे मजे नहीं आएंगे। सब डिफेंस मिला भाई तुझे, बस लगता है कम से कम 7-8 बार डालना पड़ेगा उसमें स्ट्रॉन्ग बॉक्स में 39 के पेयर में, तब तेरे को मिलेंगे एटलीस्ट, उससे पहले नहीं मिलेंगे। अभी तो भाई फिर है नहीं तुम्हारा।
चार्ज और ये नॉर्मल कर दो क्राउन, या नो कर दो एटलीस्ट, क्राउन नहीं है तो। उसके बाद अल्टीमेट भी नो की कर देना। टैलेंट तो मैंने आज ही किया। ओके, देख लेना और हो जाए। नो 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 के तो कर ही लो एटलीस्ट, क्राउन नहीं देना तो। तेरे पे बस यही है क्या अभी पोलाम में? Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. बस यही है। अरे यार, एक ही पोलाम है, ऐसा कैसे चलेगा? Toodaloo. अरे 4-5 रिडीम कोड आए हैं, मोरा बुक के चाहिए। 4-5 मेरे को 2 दिए एसबी ने, और भी हो तो दे। Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. मेरे से ले जा भाई ड्रैगन बेन, मैं बता रहा हूँ मेरे पे R11 पड़ा है। R5 देता हूँ मैं तुझे, सीधे सीधे ले जा। ये देख, ले जा ऐसे। मेरे होता, देख लियो ड्रैगन बेन। हम्म, बताओ। To manifest. ये आईडी डज नॉट एक्सेस। कॉपी पेस्ट किया, हम तो बस डॉट हटाया था। दोबारा से देख ले अमर, यही है ना? एक बार चेक कर ले, Per the तब तक हम कोड रिडीम डालता। Almighty's will. बाकी के सारे यूज में है क्या? That. What I aspire. और माँ भाई, मेरे को के कोड्स क्या? HP सही है। 200 EM। ब्लैक क्लिफ, ब्लैक क्लिफ निकाल ही लिया तुमने फिर, है? टैलेंट्स बढ़ाओ भाई। एलिमेंटल स्किल नॉर्मल तो तुमने 9 के कर दिया। बढ़िया है ये, ऑफ पीस के साथ में बढ़िया है बात।
12 क्रिट डैमेज EM, ठीक है। यार डिफेंस आ गया इसमें बहुत। क्रिट डैमेज में कम रोल हुआ है, 3 बार क्रिट रेट, मतलब एक पहले से था, 2 बार गया एक्स्ट्रा। भाई इससे अच्छा मिल जाएगा तो मैं देख लेना पायरो डैमेज, ठीक है। क्रिट वैल्यू कम है लेकिन EM HP है। चला ऐसे अभी। आई मीन पायरामर ये तो भाई इम्प्रूव होंगे अभी आर्टिफैक्ट्स, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगी, ये बढ़िया है, ये चलेगा अभी तुम्हारे में। बाकी का देखो। भाई इतनी बड़ी UID नहीं होती, रियल आईडी है, नहीं है। आर्टिफैक्ट छोड़ के पहले टैलेंट अप कर लो, ठीक है ना अमर भाई। आर्टिफैक्ट तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे, वो चूतिया गेम वो तो है ही। जेन मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कौन सा? मैक्स टू मैक्स कितना CR इनफ होता हो पे? मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि उसके पैसिव टैलेंट भी एटलीस्ट 60 तो रखो तुम। पैसिव में कितना देता था ये भूल गया मैं। भाई इसमें एक्सक्लूडिंग होता हो हर सेल्फ लिखा है। अगर हम आर्टिफैक्ट सेम स्टेट के साथ दूसरे में चेंज कर सकते तो ईथो के लिए जॉट पीस हो जाता सबके पास। अब बस भाई ये भाई जो है समझ नहीं पाया इस भी मैं तेरा सही सा। भाई 60 to 70 एटलीस्ट रख ले ड्री गेमिंग, ताकि तुम्हारी क्रिट कर पाए। एटलीस्ट जितने क्रिट हो उतना बेटर है। एटलीस्ट 60 to 70 रखो। मेरा खुद नहीं होता, वैसे होता होगा। जैसे एम्बलम का आर्टिफैक्ट है उसका हस हस्क में कैसे चेंज कर पाते भाई? वो स्ट्रॉन्ग बॉक्स की कह रहा है क्या?
value behind. 60 क्रिट रेट और 220 क्रिट डैमेज ठीक है, और अगर 220 से ज़्यादा क्रिट डैमेज पहुंच जाता है तो थोड़ा क्रिट रेट 60 से बढ़ा लो तो बेटर है। होता पर कहाँ से ऐसा हो पाता विद सेम, नहीं हो पाएगा भाई। कमीनों के भी कमीने हैं जेंशिन वाला, ठीक है। जो भी चीज अपने फेवर में हो सकती है ना उसको वो कभी नहीं करेंगे। क्या कर रहा है ये? और कौन रह गया सर? इसके ऊपर बड़ा चेस्ट मिलेगा। ये होने चाहिए ना, पहले है ही नहीं अपने पे। वो सब तो ठीक है, ये क्यों अभी तक लॉक्ड अप है? बंदा कोई दिख नहीं रहा आसपास। मार कर दो कभी तो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि चाइनीज गाली सीखो। और अच्छा, नहीं सीखना भाई। इसको लेके करना क्या है अभी? Time to go. अब जी सारा बिल्ड देखना, सारा बिल्ड यूआईडी को जो सारा का बिल्ड। दिखाना ठीक है।
दोनों में अटैक दे रखा मैंने, इलेक्ट्रो डैमेज है नहीं अभी इसलिए। वेपन और कौन सा यूज कर सकते हैं? तुम पे कौन सा है अभी? अगर कोई 5 स्टार है तो वो दे दो, क्योंकि वो अटैक बढ़ जाएगा उसका बफ के लिए। सैक्रिफिशियल कर सकते हो। और एक मून का है, ऐसी कुछ नाम है, वो कर सकते हो। हिमांशु, अरे ये ग्लेड का आर्टिफैक्ट डोमेन, ग्लैडिएटर और वेंडरर का कोई डोमेन नहीं होता। ग्लैडिएटर और वेंडरर ट्रूप्स का कोई डोमेन नहीं है। उसे वो बॉस मारोगे ना तो उससे मिलेगा। वीकली बॉस और जो वो होते हैं ना लाइट बॉस वर्ल्ड में, लाइट बॉस के नाम है ये वाले बॉस एनिमी, सॉरी। इनको मारोगे तो मिलेंगे। यहाँ पे है देखो, ग्लैडिएटर और वेंडरर। अरे ची भाई, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं। स्टार्टिंग में हम भी ढूंढ लेते, जब मेरी 45 कुछ ये आ रही थी तब मैंने ढूंढ लेते ये साले होते किधर है। सर मैंने बहुत देर बाद देखा तो फिर बॉस इस पे दिख रहे थे केवल। ग्लैडिएटर चाहिए किसके लिए तुम्हें? छोड़ो भाई, इधर ही छोड़ देते अभी फिलहाल के लिए। चाइल्ड को देने हैं क्या? तो शमिनावा दे देना, वो बेटर है। 2 पीस अटैक ही तो चाहिए तुम्हें। शमिनावा फार्म कर ले भाई, एम्बलम के काम भी आ जाएंगे तेरे को। हाँ तो वही करना, ग्लैडिएटर क्यों करना है फिर?
There are leaves around, and I know just the tune to accompany them. भाई यार नारा का था जो 76 ढूंढने वाले होते हैं ना, उसे तो मैंने भी नहीं किया अभी तक। पूरे वर्ल्ड में 76 ढूंढने होते हैं वो। Time to go. एक But a क्या momentary बकचोदी है, distraction. एक कैसे कैसे यार खोलना पड़ रहा है चेस्ट को। 2 तो मिल गए हैं, तीसरा किधर होगा? वहां पे होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरेशन? हाँ भाई। आ जाओ भाई। Illusion shattered. Into the wind. Warn my knights. Torn to oblivion. ये तो शुरू होते ही खत्म होगा। One with nature. करना पड़ता है यार, लेकिन प्रीमो जेम्स देते हैं बढ़िया। Time to go. Brings a smile to my face. दिमाग खराब चाहे जितना हो यार, करना पड़ता है मल को। प्रीमो जेम्स देता है बढ़िया। ये क्या बात हुई? ये सही है, खेलते रहो वो अपने। हाँ भाई, अच्छी चीज की है इन्होंने। भाई 3 असेंबल कर दिया, अब क्या करना है? बताओ यार। आप कौन सा कैरेक्टर पुल करोगे? हाइड्रो आर्गन? अभी तो स्टाफ ऑफ होमा कर रहे हैं पुल। क्या यार? यहाँ से जगह है क्या?
छोड़ो भाई इधर। Time to go. Shine down. कुछ भी नहीं देंगे भाई। मेरे अकाउंट में भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है भाई, हरकतें तो देखो। No escape. Everybody stand back. Strike. No turning back. Now you shall perish. इसको जो सारा नहीं उड़ा दिया। But a momentary distraction. Illusion shattered. पिछली बार तो नहीं हुआ था ट्रिगर ये। One with wind and cloud. ब्रो क्या यार, Torn to oblivion. जब तक मारेंगे नहीं तब तक चलेगा नहीं क्या यार। अब कौन सा रह गया? यहाँ से ले चुके, यहाँ से ले चुके, पीछे से ले चुके, यहाँ पे है कोई? ये है क्या? Let's light it up.
थोड़ी इसको Shine down. It's a miracle. इट्स अ मिरेकल Off we go. Off we go. Adventure time. There is no escape. Illusion shattered. I must remain calm into the wind. Adorn my night. One with nature. Let's light it up. It's a miracle. Adventure time. मिला भाई एक फुल लाइक हुआ नहीं हुए 42 पिटी हो गई 50 60 41 की पिटी है 20 पुल क्या लगता है 1 तारीख को मिलेंगे 5 इंटरमाइंड उसके बाद उस टाइम पे 400 प्रीमोस भी मिल रहे होंगे और ये इवेंट भी चल रहा है कितने दिन लगेंगे चैट वो हो गई है क्या स्टक या कुछ बोल ही नहीं रहा 30+ विशेष मिलेगा ये वीक में आई एम बिजी ठीक है भाई 2 इधर 1 तारीख को है बिजी आई एम बिजी मैं खुद ही खेला जी स्टाफ ऑफ होमा निकालूंगा बढ़िया भाई डेडिकेशन होनी चाहिए तुम्हारी जैसी बस तीन सौ 14,000 एक्सपी चाहिए आई गेस है ना Off we go. Adventure time. Time to go. Strike. Now you
No turning back! One with nature. Inazuma shine determined! Take them. I have no need. मेरे को 16 विशेष चाहिए और 12 क्वेस्ट के पीछे लॉक्ड है अभी तक। मैं तो चेस्ट फार्म भी इसीलिए कर रहा हूँ कि कोई क्वेस्ट मिल जाए। There is no escape! Adorn my night! It's a miracle! Off we go! Adventure time! Off we go! Shine down! Teamwork is dreamwork! Flash! On to oblivion! ऐसे ही मर गया। Who says there aren't benefits to वर्ल्ड life, क्वेस्ट you know? करो। दिखने भी तो चाहिए एक्टिवेट के लिए। अंदर कैसे जाना है इसके? चला रुको, कार्ड लाता हूँ अपना। किस लिए? क्रीटो से टॉप अप करेंगे आज। और अनित भाई कैसे हो? मेरे को लग रहा है संडे तक मिल जाएगा मुझे। टॉप अप होमा संडे को ही मिल जाएगा आई गेस।
हार गया, होमा की जगह दूसरा डंडा दे दिया। कौन सा दे दिया? मैं तो ना से था। ये कितने हाइड्रो सिजिल हैं आपके पास? ध्यान नहीं दिया। 55। उधर जाके अब भी कर लेंगे। स्काईवर्ड हार बढ़िया है भाई, कोई नहीं। हाइड्रो का है किधर? ये रहा। जोंगली को दे सकते हो क्या? One with nature. Wind strike. Brings a smile to my face. जेनशिन गिफ्ट, ये तो करके रखा है। ये तो सबसे पहले लेते हैं ना जब अपन गेम में जाते हैं। ये तो सर्दियों पुराना है भाई। जब गेम मतलब जब यूट्यूब पे ज्यादा वो करते थे ना, तब दिया था ये गिफ्ट का। लेकिन नए प्लेयर्स के लिए है ये, जो भी मतलब गेम में आते हैं अभी। Time to go. I can't wait to see how this turns out. चलो न्यूविलेट का वो कर देते हैं, स्टोरी क्वेस्ट। यार 60 ज्यादा दूर नहीं है। हाँ भाई, Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक तक ही हो जाएगा।
इस वीक तो मुश्किल है। क्योंकि फ्राइडे तो आज है ही। ये क्वेस्ट एक्टिवेट कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। मैंने आज एक्ट 3 कंप्लीट किया और कॉन्क्वेस्ट की। बढ़िया बढ़िया। बहुत टाइम है फॉन्टेन से विश मिलने में। देखो वेकेन अब मैंने ले लिया है। अब हाइड्रो आर्कोन की भी वेपन आई गैस आ जाएगी। 28 पुल और लगेंगे मेरे को स्टाफ ऑफ होमा कंफर्म होने में, ठीक है। तो उसके बाद सारे पुल सेव होंगे वेपन बैनर के लिए हाइड्रो आर्कोन के। कंफर्म नहीं रहेगा कि हाइड्रो आर्कोन का वेपन आ ही जाएगा, लेकिन काफी रहेगा कि चांस तो रहे अपना एटलीस्ट। क्या बैड न्यूज़ है? Wait, did I hear that? That's right. No, but why? भाई ये तो कुछ नया ही सुन रहा हूँ मैं। Traveler in Paimon, this is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? ट्राई Thank you for करते हैं your रुको अभी। So, what is it exactly? A Melusine named And then... 4.2 में ही आएगी भाई, ये कंफर्म्ड है। I have no idea why I've checked the schedule in advance and it seems like they're... Thank you for understanding. She may have no... Yes, understood. Judging from बोल रहे हैं Selene's कि reaction, it must be वो pretty पढ़ा rare तो for है। you to investigate stuff personally. फिर What's चैट so कौन सी special मिस की about मैंने? this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be चैट मिस complicated क्या कहती conflicts है? of अनित interest भाई behind पढ़ तो all this, लेती है। so I must eliminate all risks in advance. Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention. Long story short, there were few people I गाइजों could का trust, वेपन मिल गया। but I had two तो क्या subordinates who करोगे? were exceptionally कुछ trustworthy नहीं, एक and जगह capable. पड़ा रहेगा, जैसे न्यूबलेट का वेपन अभी पड़ा है। न्यूबलेट तो वैसे अपन इन फ्यूचर निकालेंगे। Unfortunately, the reforms damaged the interests of the incident resulted in Carol all Melusines I granted their many common folk believe that I share a special bond. Some of them, especially those who I have nothing against the opinion that has already happened once. Even there's the guards, the Marisha... Based on prior experience, the political system. However, since Outsider, but aren't you the chief? I understand where you know very well about my true identity. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider. A fish out of water. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot smoother. Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. जैसे ये कुछ करती भी है, कुछ करती भी है, जैसे इन्वेस्टिगेट में साली। ठीक है भाई, इससे अच्छा फरीना निकाल लो और We should visit वेपन। Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. भाई ना भाई, इस हिसाब से तो मैं न्यूबलेट अभी निकाल लूं Like he doesn't truly belong और here in Fontaine, फरीना तो फिर but वैसे भी निकाल लूंगा। Paimon feels like he has a kind of skewed perspective. इस हिसाब से तो न्यूबलेट मैं अभी निकाल लूं और फरीना इतने फुल सेव कर लूं कि गारंटेड हो जाए दोबारा आ जा। But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water
इसको ट्राई करते हैं चलो। ले रखे हैं ये तो। Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. भाई भले ही बेकार हो बाइजू का वेपन, Please कोई allow me नहीं to पड़ा रहेगा, rephrase. अपग्रेड As में a यूज कर dragon देंगे out of water. हम हीरो की तरह। Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. हाँ मुझे भी बढ़िया लगा भाई। Time to go. निवेलेट निकालूंगा मैं बाद में। ये भी ठीक है। बाइजू क्यों निकालना है? The weather's amazing today. Kiara, Monsieur Neuvillette! And you are? Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. कर लेंगे सर। I heard from Sidine that you received. A threatening letter. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said, but Sidine told me it was a threatening letter. Have you run into any suspicious-looking people recently? हीलर की Suspicious इतनी नीड नहीं people? रहती है अनित भाई। आप पे जोंगली है और एक जगह बेनेट रख लो। Did you? Easy. Nope. Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. Oh, let's see. Now then, get lost. A simple threat. Neither the handwriting nor the content, we can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mammonia to review some official document. Kiara, you should come with us. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Go And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara... Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. Don't worry, your Big Sis Paimon is super strong. All right, let us go. We'll take her to a lot of सबसे places. पहले भगेगी ये। So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2... वो देखा जाएगा जब टाइम आएगा, अभी से I can't सोचने। remember. ये भी ठीक है। But I remember coming to the court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Neuvillette mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up. पैमान को स्वॉर्ड बना के You're a फाइट big करना sis. इतना ही स्ट्रांग है तो। Paimon sees. Hey, Traveler, did you hear that? Strange. Paimon felt like someone was... Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two? Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here?
Did you run into any? It's not really trouble. May I begin? Of course. क्या कार्टून बना दिया भाई? No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Neuvillette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some time. Pretty cool, huh? All right. Now that, hear me out. Of course. Is there कहाँ anything से I need to do? बड़ी है पैमान? Please wait a moment. Seems Unknown like god है it's ना? going really well, huh? What are you looking at? Is there really someone watching us? Shh. Let's sneak over and take a look. Strange. Why isn't he back here? Gotcha! Ah! Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. Threat letter? What threat letter? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream, but it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when So imagine how surprised बस कोई I was ट्रैवलर seeing को him बोल on दो the streets पाइमन today. को अननोन It गॉड seemed like you were investigating some... Of course, I'll make sure to Pom turn in my pom manuscript hare. to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties पम involved. पम पम जैसे ही लगता है भाई. Yeah, we're doing a secret. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. What a shame. Chances like this don't come by very... In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right, then. ये साले हर किसी के स्टोरी में टपक जाता है शार्लेट. Not so loud. किरारा के में भी आ गई Did थी. an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who फिर knows? पाइमन We might के find something. And don't worry, I know what I'm doing. हाँ The वो तो secret's है. safe with me. But I gotta warn. Why? People care a grip anyway. Well, that was a nice chat. What do you think? I think it's Huh. Cloran! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Neuvillette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. I happened to have some time at the moment, and came to take a look. I sometimes have my clothes custom-made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Neuvillette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Neuvillette. Okay, then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Neuvillette. एक ट्रैवलर को भी बोलने दो कुछ. बेचारा शांत बैठा रहता पूरे टाइम. इससे बढ़िया तो होंकाई का ट्रैवलर है, एटलीस्ट थोड़ा तो ज्यादा बोलते ही है इससे. इतना नहीं तो बोलेगा ये क्वेस्ट में. रेयरली बोलता है भाई. बता दियो कब बोलेगा, मैं जल्दी जल्दी स्किप ना कर दो. Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Cloran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well,
Did you find any? I've been looking over the case records. I've come up with 2 plans. On one hand, on the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases. They both sound लास्ट में कहीं बोलेगा स्किप नहीं finish कर browsing through सकते all? Don't फिर worry. ठीक है I'm a fast reader when it comes to... Thank you. किसी ने एनिमे वर्ल्ड ट्रैकर देखी है बीस्ट देखी है तूने कल उसको मैंने दोबारा से देखी हाँ वर्ल्ड ट्रैकर Have you made any progress? We skimmed through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there's so many बढ़िया है भाई documents lying टॉप नॉच around. एनिमे I would love लेकिन to answer that. ज्यादा If लोग memory देखते serves me नहीं हो right, ऐसा there should be at least 100,000 cases. सो पुलिस The वाली documents एनिमे you see are just नहीं भाई Whoa. पुलिस वाली नहीं है वो That might be how it seems from another's. There are many documents here. You read. All right, let us ट्राई take a करके break. देखना 3 सीजन है उसके डब में भी है सब में भी है बढ़िया एनिमे है अगर नहीं देखी तो ट्राई करो हाँ स्टार्टिंग में थी स्कूल में 1-2 एपिसोड तक ही बस और एपिसोड में से फर्स्ट सीजन में उसके 73 एपिसोड्स हैं कुछ सेकंड सीजन में 12 और थर्ड सीजन में भी 12 ऐसे ही कुछ Please pardon my lack of और अच्छी एनिमे है Oh, drinks! Thank you! Paimon wonders what Novelette likes. He seems like the type. अच्छी एनिमे है भाई उसकी मांगा अभी भी ऑनगोइंग है What's inside these glasses? It looks और just बहुत अच्छी एनिमे जाएगी बहुत धीरे धीरे अच्छा आगे astute बिल्डअप हो जाएगा उसका It is indeed water. लेकिन ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है उसे बहुत कम लोगों को सुनता हूँ बात करते हुए plain old. What did you think it? ट्राई करके This देखना water is बढ़िया indeed एनिमे लगेगी I believe you've already tried Fonta. Said water is sourced from all across Tivat. Here is one of their latest products. Water. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of sight distinct. Really? Let Paimon try. What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't this just. How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? अच्छा क्वेश्चन है Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. पाइमन की There's बेइज्जती nothing to किया hide. फिर I was simply organizing my thoughts. I कौन accepted this सा एनिमे position वर्ल्ड because I ट्रिगर wanted to seek out answers to questions that have Questions? Are there really things you can't figure out? many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. Perhaps the elemental... True. Some of them have very unique personalities, too.
I have been holding इसका on, but चेहरा there is देखने one में thing बुरा my लगता है guess मुझे would तो be that पाइमन there का। are at least some similarities between. Have you made any progress then? Perhaps, but that's why I'm quite. Are we gonna I wasn't able to find. water? Do you? That's right, the Fountain of Lucy. If there really were an organ, perhaps we'll be able to find some new leads by Perhaps we should go. XP मिली होगी अच्छी खासी मुझे 327। गायब होने वाली है पायमन, क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी बात। पायमन अगर परमानेंटली गायब हो जाए तो मैं ये क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं करूंगा। I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone. What should we do next? Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. A safe distance? No. Oh, it's glowing! बट अबे यार यार ये फंसाने वाला काम नहीं करना। चलो सही है, पायमान तो नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं खोल नहीं पा रहा ना, ट्राई किया था मैंने। I know, but not only can I But a meaningful life also. It's still in truth, for almost 20 years, we've stayed in our village without finding. I understand your confusion. I too. ये स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले वही ट्रैक किया, मैं खोल पा रहा हूँ कि नहीं। Different identity. There aren't many. Oh, I'm confident. I believe in you. Huh? Yes. That stone. He is an. सैड स्टोरी तो गोजो के साथ हुई है। यो आइमो गंबारे गंबारे। Hello. Can I help with anything? Thanks, but no. Oh, लेकिन क्या ये फायदा यार, ऐसे भी नहीं चाहिए। hello. I'm Carol. परमानेंट जाए तो परमानेंट दे। Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilat allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted the— Go away! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Mare Chaussee Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently.
perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilet's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Nervilet said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little hard. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner. स्टोरी एंजॉय करते हैं गाइस. स्किप नहीं करूंगा, फास्ट देखते हैं जब तक कि कुछ ज्यादा ही वैसा ना आ जाए. Monsieur Nervilet, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melazines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the thought of— Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Nervilet, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought them to the court of Fontaine, Nervilet will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. दूसरों पे कैसा करोगे? अब बात तो सही है भाई. Turn the murderer in! स्वागत नहीं करोगे हमारा? भग जाओ चूतियो. Melazines can't be trusted. That हो गए यार, 2 दिन से सुन रहा हूँ मैं. बढ़िया स्टोरी चल रही है, देख आराम से. डोंट इंटरप्ट थोड़ी देर तक. Peaceful coexistence? एक चीज पूछनी थी मुझे. थोड़ी देर बाद. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. The results of the investigation are in, Captain Vautrin.
Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking... we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Neuvillette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Neuvillette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Neuvillette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Neuvillette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law.
To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Nervillet, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Nervillet, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Nervillet! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Nervillet. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different James sir. species peacefully coexist anyway? मैं डेफ हो रहा हूँ उतना आपकी स्टोरी तो नहीं खत्म हुई लगता तो जब खत्म हो जाए तब मुझे बता देना क्या काम है बता अभी अरे वो कह रहा था कि रे तो कि एक्सप्लोर करते करते डेली हो जाते हैं हाँ तो हो जाते हैं खुद ही क्या एक्सप्लोर करना कुछ भी एक्सप्लोर में क्या होता है यार तू यार थोड़ा दो चेस्ट कर लूंगा पूरी हो जाएगी नहीं तो यही तो पूछ रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लोर कर It is not only the fountain, but I rarely ever do anything like this. Which स्टोरी भी करेगा तब भी हो जाएगा It's fine. It was a coincidence. You should now understand. Paimon's starting to lose track of what you're saying. Don't leave Paimon out of the conversation. Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it? In that case, the resentment should have इंटरेस्ट come में from एक that कमीशन ऐसा incident. कुछ है ऐसे भी बोल रहा I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is. We are planning to return to the Palais Marmonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their Wait for my word. Ta-ta! Nervillet, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out,
No one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Same चीज हो रही है. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit— Everyone, please stay alert to your surroundings. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check— This isn't a good time. Come on. Don't act tough. I bet you're hungry too. All right. You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift schedule. I heard even Nervilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? सब Were you लोगों की planning अपनी to shirk your duties if Nervilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh! Look! Isn't that Nervilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais. देखा रहा टाइम के साथ कितना चेंज हुआ. हाँ भाई, अच्छी बात है हुआ चेंज. वैसे तो अब ट्विस्ट कब आएगा ये देखना चाहता हूँ मैं कि बिहाइंड कौन है इसके. नहीं, ट्रेवलर ये सोच रहा होगा एसबी कि पायमान को ड्रैगन का फूड बना देता है. कौन है भाई? Time to go. हो सकता है, देखते हैं. Look for a suspicious document.
अब कौन सी बची है सस्पिशियस डॉक्यूमेंट? बीस्ट स्मगलिंग केस वाली। ओके The smuggling case with the list of involves. What does it say? The principal offend those with close among them. So many. Yes, it seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Monsieur Neverlet, someone claiming to be from the Spina Durasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. Time to go. Time to go. Follow the wind. Hey, Navia, we're here. Whoa. These are the people who have... Invite them over. Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels off, but oh well. Yes. Your Essa? Yes. Yes, Monsieur Nervilet. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico? Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I'm extremely grateful for your help. मैं अभी आता 10 मिनट में. Formalities for later. एंड पार्ट आ गया बस इसका. Setting up the conspiracy. It'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. गेम ऑफ द रिच ये कंप्लीट करना पड़ेगा. ज्यादा रहेगी भाई. ये क्रेडिट्स कैसे लेना है पता है किसी को? 300 बेस्ट ऑब्टेन क्रेडिट कूपन्स. कहाँ पे करते थे काम अपन? $300 तो है अपने पे. प्रोडक्शन जोन किधर है? और नीचे है क्या?
Time to go. Time to go. मैप खोलो ऊपर वाला ये वाला तो लेना कैसे है इधर इधर लिखा है ऑब्टेन क्रेडिट कूपन्स 300 भाई स्टोरी क्वेस्ट का वो बता रहा है यही कंप्लीट करना पड़ेगा पहले मैं भी वहीं जा रहा एक क्वेस्ट वो भी है Time to go. कितनी देर तक नीचे और जाएगा Who says there aren't benefits to a life of wandering? यहाँ पे चेस्ट खोल के लेना पड़ेगा क्या Time to go. Time to go. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.
Time to go. Time to go. क्या हुआ अभी तक? अपना स्टक हो गया, एक क्वेस्ट करना है अपने को पहले। There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. गूगल करता हूँ मैं भी। Wherever. हेलो ट्रिगरमैन। यार जेंशिन वाला पहले ही बता दिया करे ना, बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। और अनित भाई Time to go. without I finally got Dragon Bane। ये भी ठीक है।
किस्मत हो तो फिर एकदम से फ्री गेमिंग जैसी खराब। अंडरग्राउंड से ही जाना था क्या? कोई नहीं भाई, कुछ दिनों बाद मोरा की कमी तो नहीं हुआ करेगी मुझे। Who says there aren't benefits to a life of one with nature? Time to go. Follow the wind. भैया कब होगा खत्म? नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा यार 60 होपफुली।
पता नहीं, अभी तो एक के बाद 30 मिल चुका मुझे। नेवरेट की स्टोरी से तो 60 मिलेगा। अब 500 क्रेडिट्स चाहिए था। Time to go. Time to go. Nevelet came home with weapon under 67 with 7 150 on both. बढ़िया भाई, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। You are not welcome here. Quiver! Glory to the Shogun! Stand back!
किस्मत उधार दे दे भाई, दे किसी में दे दो उधार अपनी किस्मत। नहीं निकला। 42 पिटी। Time to go. संडे को मारेंगे अभी। कल 400 मिलेंगे, संडे को स्पाइरल भी होगा, और फिर वो 5 उससे मिल जाएगी मंथली सेट से। हो जाएगा। Time to go. डेली शाम को हो पाएंगे अब लग रहा। यार कितना बड़ा मिशन है।
हम्म चलो बाय 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 बाय। Time to go. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Time to go. Time to go. क्या हुआ? 20 और चाहिए। इसके बाद एने में कौन सी देखूं, आज ये सोच रहा हूँ। आज के एने में वन पंच मैन मांगा नहीं आए, वो मांगा हो गई, एने में थोड़ी ना हुई, उसे पढ़ना पड़ेगा, देख लेकर नहीं है।
पेपरिका नहीं भाई, मूवी बहुत कम देखी है मैंने। देखेंगे। नो एनिमे इज मांगा रियल। अच्छा, गिल्टी क्राउन देखी है तूने बीस्ट? उसकी मांगा ही नहीं है, बता अभी। ढाई सैकड़ा, ठीक है भाई। इतने कैसे मिल गए? Illusion shattered. Into the wind. Flash. Inazuma shines eternal. Clouds high. Birds call. No turning back. Now you shall perish. शुरू होते ही खत्म हुआ है तो एक बार जब सभी चले। ये भी ठीक है।
ये हमारी तरफ से कब से लड़ने लगे? हम्म हम्म कल तक हो पाएगा लग रहा है। हेलो मांझो। वैसे कोई वेबसाइट है क्या जहाँ इनमें मूवी डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड का तो पता नहीं यार, लेकिन तुम अगर पीसी पे हो तो आईडीएम डाउनलोड कर लो, उससे हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट पे देखना, वहां पे से डाउनलोड हो जाएगा। एनिमे डाउनलोड करने की जगह सीधे ऑनलाइन ही देख ले भाई, वही बेटर है। डाउनलोड में वैसे भी स्पेस जाएगा तेरा बहुत।
हाँ भाई नेवलेट कैसा है? बढ़िया भाई।
ब्लू वाले पे रुकना है ना। देखते हैं भाई, ये तो नई चीज बताई तुमने बीस्ट। Inactivity serves no purpose whatsoever. इतने दिनों बाद इनको चीची की याद कैसे आ रही है? Time to go. Time to go. Time to go. और ये लड़का हिलचल बन गया है मेरे को लग रहा है। पता नहीं है। Time to go. Time to go. Time to go. Time to go.
Time to go. Okay. Time to go. तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। Yeah. Shine down. इसे तो कजुआ ने खत्म कर दिया। साला इन दोनों को स्किप करवा दिया पन्ना। चाइल्ड का क्या?
Time to go. Time to go. Time to go. हो जा खत्म। गेम कब स्टार्ट किया आपने? यूजुअल टाइम पे 10 बजे। ये क्वेस्ट खत्म होते ही बंद कर देंगे। नेवलेट का और देख लेंगे, 10 मिनट रह गया हो तो कर देंगे। अनफिनिश्ड कॉमेडी भाई एक और शुरू हो गया। इन ए न्यू लाइट। Time to go. ठीक है Follow the wind. कर देता। Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself! Guess we've made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once, to be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. He's got the same concerns we do. I'm concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Did I hear someone say Melazine? What happened? Sijuin! ये सीजविन को उड़ाओ पायमन के बाद। There's no need to worry. Well, that's great. But if the criminal's still... Ah, head nerd. Writhsley. Okay, I think of it as more thanks for the trouble. Whoa. If Paimon... Well, were I still a criminal, I'd probably... But enough jokes. Make yourselves at home. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. Time to go. Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? Please rest here. Oh, and thirst is a word. I'll bring you some. Typical Sijuin. Why aren't you two saying anything? You noticed them too. The badges. Familiar. But if both of you say so, let's go ask them about it. That's not a bad idea.
Time to go. Anything you need? Oh, this? What's that? We have a we have never helping each other. Sounds like a pretty... But people... Interested in... If you'd like to learn... A slogan made here. You two look... It's the symbol, from what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals for myself. The first president, all of us have... We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neverlet. Did you manage to gather any intel? According to them, I personally, Carol's medal was... Oh, so the network... Monsieur Neverlet, His Grace has requested your presence in his... All right. Allow me to introduce this fine gentleman. Why don't you explain everything? Neverlet? Calm down. Merely, was it your idea to send that? Hassan has already confessed. That idiot! Let me ask this another way. It was your... Who is pulling... What? You're not trying to frame me for something I haven't done. It's best. I assume you are I can do that. You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods, and after making a few trips, I was suddenly approached by the Marechaussee Phantom. They accused me of smuggling prohibited, but I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me... And then you decided to take revenge on the Melazines? Over that? My initial target was Neverlet. Everyone in the fortress of Meropide was declared guilty by him, after all. So they must more or less hold a grudge against them, right? But for some reason, no one wanted to team up with me. That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to redirect my focus onto Melazines to salvage things. I recall that Kiara was the one who confiscated my goods for inspection, but the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Kiara and force her to resign from the Marechaussee Phantom. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? No. Is it true that all members involved... Yes. Sijuin, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. So, Monsieur Neverlet. Yes, I experienced a similar incident in the past, so I had to be prepared for any possibility. And how long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. Time can change a lot of things. Everything's different. What do you mean? 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people... That's right! We saw lots of people standing up for Melazines on our way back to the Palais Mermonia. Monsieur Neverlet, the Melazines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you.
When people refused to place their trust in Melusines, it was because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with Dominique. I am undeserving of such high It isn't anything special or worthy of It is unnecessary to... There's no need to be. You're no longer that... I must say that thank you for Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not stay for a cup of... Thank you for the offer, but I know how this place works all too well. While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor resentment. The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. In that case, I'll have to insist. I still have 2 more things to say. Please. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. I know of what you speak. The guard was indeed deployed from the Palais Mamornia's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, I leave that matter in your hand. Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your imagination run wild. Those from up there have a tendency to sympathize with others. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. I see no issues with that. Great, that's... The other thing was born from... Yep, never... I noticed the small... I've looked into their... according to existing... In other words... What? During his trial, Perhaps he had been... An act? Nervillet and thus... And to those who had been sitting... अभी भी बचाएगा I कुछ? don't have anything to say. Apart from express... Well then, let us head back. Please, take care. That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts, too. What do you think of me? अब बोलेगा क्या? Paimon agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact. Hey, any comments? What I really think is, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. गुंगा बोला रे अब आगे नहीं बोला यार साला एक लाइन बोला बस हट That is, as I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. These changes were not due to any specific. I will try to contemplate this further. एक लाइन बोला सही से Oh, huh? It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline.
When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Meripede. It's a good place for me. हाँ भाई बोला था एक हार्डली 2 लाइन बोली उसने. He owes me so many answers. Nervilette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Is the matter resolved? Yep, we found the person who sent that threatening letter. Oh, that's wonderful. Sorry for There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved. At the Palais Mermonia, I was worried that the Well, now it looks to celebrate this. That's not how you... I will, of course, come up with questions. Yes! Now, if you'll excuse, I hope it will assuage. खत्म हो गया. Kiora. It's quite all right. And thank you too, Traveler, and big Do thank you remember Monsieur. Domenico? Let me... By the way, in my dream, I can't remember... I can sense... Oh, I promised to Mom... Of course. See you next... See you next time. हैने में देख ले जाके. मैं भी बंदी कर रहा हूँ जंक्शन. देख लिया रे तो एने में देख ले फिर.
अरे हैने में देख ले या एने में देख ले, दो ही चीज है। हैने में क्या है? कुछ नहीं है भाई मोहित, कुछ नहीं। Ad Astro. Thank you for Ad Astro. हम्म। मैं सब बंद भाई, अब वो बोला जो है वो तो तुमको पीछे करके देखना पड़ेगा एसबी। बीस का हूँ मैं, नहीं था मैं तो नहीं। चलो भाई, हो गया। The world remains constant over the centuries. Life is the dew of dawn, or a bubble rising through water. एक दिन 12 घंटे। ये रेसिडेंट एविल 4 भी डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक, मैं क्या करूं उसमें? कोई गेम बता दे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ले, वॉर जोन। कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ले, जस्ट कॉज खेल ले, फार क्राई खेल ले, असिसन क्रीड खेल ले, क्या है, विचर 3 खेल ले। पता नहीं मुझे मोहित। चलो भाई बंद कर रहा, ठीक है। सारे बैटल रॉयल बता रहा है, मार दूंगा। अरे पबजी पीसी खेल ले, फोर्टनाइट खेल ले, एपेक्स लेजेंड्स खेल ले। चलो भाई, बाय।